Good morning, dear students. I hope you are clear with models and might have done worksheet number till worksheet number 4. Let's move on to worksheet number 5. Read the following conversation. Saloni, I am confused which stream I should opt for, science or humanities. बेटा स्ट्रीम होती है जैसे साइंस होगी, मेडिकल हो गया, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, कॉमर्स, दीज आर स्ट्रीम्स. और ह्यूमैनिटीज़ को बेटा कहते हैं आर्ट्स. Neha, you should opt for the subjects that interest you most. Look at the usage of should बेटा. I should opt for, मुझे कौन से लेनी चाहिए. You should opt for the subject that interests you most. शुड आपको वो लेनी चाहिए जो आप जिसका उसमें आप में इंटरेस्ट हो. सलोनी, आई विश टू ऑप्ट फॉर ह्यूमैनिटीज़ बट माई पेरेंट्स इंसिस्ट दैट आई मस्ट ऑप्ट फॉर साइंस. कहते मेरा इंटरेस्ट तो आर्ट्स लेने में बट माई पेरेंट्स आर फोर्सिंग मी, और यू कैन से दे से आई मस्ट ऑप्ट फॉर, मतलब मुझे लेना ही पड़ेगा. आई डोंट हैव एनी ऑप्शन. ओके, टू ऑप्ट फॉर साइंस. डू यू थिंक आई शुड टॉक टू अ काउंसलर अबाउट दिस. ये आपको लगता है कि मुझे किससे बात करनी चाहिए? एक काउंसलर से. नेहा, आई थिंक यू ऑट टू टॉक टू योर पेरेंट्स फर्स्ट. और टू आपकी एक मॉरल ड्यूटी बनती है कि अपने पेरेंट्स से बात करो फर्स्ट. यू शुड एक्सप्लेन टू देम द रीज़न फॉर योर चॉइस. आप उनको बताओ अपनी रीज़न किस चीज़ का आपने क्यों चूज़ किया ये. आई एम श्योर दे विल अंडरस्टैंड. मुझे पूरा विश्वास है कि वो आपकी प्रॉब्लम को समझेंगे, आपके चॉइसेस को प्रेफरेंस देंगे. रिमेंबर, शुड एंड ऑट टू आर यूज्ड टू टॉक, यूज्ड टू आस्क और फॉर गिव सजेशंस. आप सजेशंस के लिए देते हैं, पूछने के लिए या बताने के लिए, एडवाइस के लिए किसी को आप सलाह देते हैं. एंड टॉक टू अबाउट ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन, जो आपकी मॉरल ड्यूटीज़ हैं या अपने पेरेंट्स के लिए आपकी जो रिस्पेक्ट रिगार्ड बनता है उसके लिए यूज़ करते हैं बेटा. लेट अस स्टडी सम मोर एग्जाम्पल्स. You should go for a walk daily. It is a suggestion. You ought to be honest while taking an exam. It is your moral duty to be honest while taking an exam. There is a slight difference between should and ought to. Both are used to give advice and suggestion and to talk about duty and obligation. However, when there is a sense of moral duty or moral obligation, we use ought to. You should opt for your favorite subjects. It's a simple suggestion. Whereas you ought to talk to your parents before talking to a counselor. It is morally correct to talk to your parents first and then talking to a counselor. So we use ought to with moral duty, okay, moral obligations, and should is for suggestion. Now worksheet number 6 in the unit changing times A1 of MCB. MCB is better my English reader book. You have read about common complaints of parents against teenagers. Okay, based on your reading, prepare a list of a few things that parents feel teenagers should do. Hanji, they should help around in the house. They should obey the elders. They should make a timetable of playing, of studying. They should sleep at proper time. They should not watch TV more. They should work for long duration. They should do some physical work. Okay, so these are 13 things that parents expect children to do at home. There are almost 6 points. You can write further points if in case that comes in your mind with the usage of should. Okay, let's move on to worksheet number 7. Discuss with your partner and list a few things that Pranay in Give Me a Break in Unit Changing Times of My English Reader ought to do to bridge the communication gap between his father and himself. Beta, I hope you have gone through the chapter unit compassionate, the changing times in English Reader, and there was a gap between father and son, and father wants to give suggestion to his child, whereas child wants his independency. He does not want to listen to his parents, rather he wants a space. Okay, now so I mean in the end it is given that the children should behave with respect with their parents.
They should give proper due respect to their parents, and they should simply have simple friends. They ought to leave bad company. उनको अच्छी कंपनी होनी चाहिए और उनका मोबाइल यूज़ कम होना चाहिए और अपने एल्डर्स के साथ में अपने सिबलिंग्स की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. Okay, so with the usage of ought to, we are going to make sentences now. He ought to respect his father. He ought to have simple friends. He ought to leave bad company. He ought to reduce the use of mobile. He ought to respect his elders and sisters. I hope you are clear with this. Rest, I expect you to read the chapter, give me a break again, and do and write more points in case you want to. Worksheet number 8. Let us revise suggestion, duty, obligation. बेटा सजेशन के लिखो, हम शुड का यूज़ कर रहे हैं सबसे पहले. टू टॉक अबाउट ऑफर, आस्क फॉर सजेशन, ड्यूटी और ऑब्लिगेशन. यू शुड अपोलोजाइज टू हर. इट इज़ माई सजेशन एंड आई थिंक इट इज़ राइट. हम कई बार कह देते हैं ना, तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए. To talk about moral duty, moral obligation, you ought to apologize to her. It is morally correct for you to apologize. कि या अगर आपकी गलती है तो आपकी मॉरल ड्यूटी बनती है कि उससे माफ़ी मांगो. बेटा मस्ट नेसेसिटी के लिए यूज़ होता है और कंपल्शन के लिए मस्ट और हैव टू हमने कल की क्लास में, प्रीवियस क्लास में किया था. To express necessity, compulsion from the speaker. You must apologize to her. I insist that you apologize to her. है ना. So it is a compulsory thing for you. You have to express necessity, compulsion from outside the speaker. You have to apologize to her. There is no other option with you. Okay, beta, I expect you to to write all these points in your practice book with the use of pencil only and try further chapter. Worksheet number 9 to 11 are pending and do it for yourself is pending. I want you to try it try with your pencil, and in case you are feeling any problem in the models, you can contact me. In the next class, I'll be giving you exercise for practice in your notebook also.